Hi everyone, welcome to another session of ZDM practice. So before this we have covered around 3-4 ZDM practice sessions, and after that I got somewhere busy in the DM booster course. So if you want to enroll for the DM booster course, the enrollments are still open. You can go onto our website. The link is in description and you can enroll. The course price is just 799, where we are covering everything around ZDM and everything around ZQADI also. So we are covering all the past 8 years paper. So now let's start with the today's set, right? So the pattern is same. First, let's read the main data, and after that, I will give you 2 minutes to decide on the right answer, right? Then we will discuss the right answer for this question. So let's discuss this question. क्या बोल रहा है? Kasta, a small industrial town, hosted a steel plant and its associated ancillary companies. Most of its residents were steel plant employees from different states of the country. Okay. While the town offered employment opportunities, it lacked an airport. For those wanting to fly, the nearest airport was Michaelganj, 100 kilometers from Kasta. Fine. To reach the airport, people rented taxi services available at Kasta, and Prabhu was one such taxi service provider. Prabhu's rates were reasonable. A trip to airport cost 2200, but for a round trip the fare was 3000. Makes sense, right? तुम्हें एक साइड जाना है तो it will cost you 2200, but if you want to do upside down you will have to just pay 3000 rupees. Yet it was not just the affordability that made him popular. His reputation for punctuality and reliability was unmatched. मतलब वो जिस टाइम पे आता था, जिस जो हम उसको टाइम देंगे, right, he used to reach at that time. So punctuality and reliability was the unmatched, right? These are some of the qualities of Prabhu. When it came to ensuring the safety of women traveling alone, he would always be the first choice, right? So he also makes sure that there is safety for women. Such was his trustworthiness that even the steel plant would solicit his services when expecting solo female visitors. Moreover, whenever residents encountered issues with their personal cars, they would turn to Prabhu for help, right? So there are a lot of drivers, but Prabhu is the trustworthy one. However, the word shifted when COVID-19 pandemic struck. Travel restrictions and safety concerns limited Prabhu's trip to Michaelganj for over a year and a half. Financial strain followed, with accumulating interest on his home loan. He was weighed down by debt, but things improved once COVID-19 travel restrictions were lifted. So COVID-19 आया और थोड़ा सा financial strain आया प्रभु पे, because he was not getting enough travelers. Having faced financial hardships during the COVID-19, he sought to offset his losses by raising the fare. है ना, अब जो उसको लॉस हुआ था during the COVID-19, he want to compensate that through the increase in fare. Yet he was aware of the stiff competition in the town where many others offered services at a similar fare as his. बट ही इज ऑल्सो अवेयर कि यार बाकी लोग उसको अगर कम प्राइस में ऑफर करेंगे, सो देर विल बी लॉट ऑफ कंपटीशन एंड पीपल माइट स्टार्ट प्रेफरिंग अदर्स एज कंपेयर टू द प्रभु. बट प्रभु की कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी है जो कि बाकी में नहीं है, सो वी विल कंसिडर दैट ऑल्सो. सो दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन वन बाय वन, right? So let's first read the question and then you should mark the correct answer, or you should think for 2 minutes and tell me in the comment section which should be the correct answer and why. Right? So Prabhu decided to increase the taxi fare for all future trips. He planned to charge 3000 for a one-way trip to the airport and 1000 more for a round trip. Right? Now he wants to charge 3000 for one-way trip and 4000 for two-way trip. Right? Earlier it was, I think, 2200 and this was 3000. So थोड़े थोड़े fares increase हुए, around 800,000 से fare उसने increase किया. Which of the following facts will best help Prabhu's regular customers in accepting the increase in fare? Right? ऐसा कौन सा फैक्ट है कि लोग अभी भी प्रभु को प्रेफर करेंगे with the increase in fare? Right? So read the options one by one and then we will discuss it in detail. First, let me see how many of you get it correct. Let's see. Also provide your reasoning why you think specific answer is correct. चलो, let's read the options one by one. Right? Why would people still choose Prabhu over others even if the fares get increased? First option is because the cost of living has gone up in Kasta. अगर cost of living भी increase हुई है, that means okay, the Prabhu will also increase the fare, but then
बाकियों ने शायद फेयर इंक्रीज नहीं किया हो, है ना, यही प्रभु का कंसर्न था। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग माइट बी अ गुड चॉइस टू गो फॉर, बट लेट्स वेट फॉर दैट एंड लेट्स रीड अदर ऑप्शंस आल्सो। राइट, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है बिकॉज प्रभु इज पंचुअल एंड रिलायबल। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज विच डिस्टिंग्विश प्रभु फ्रॉम अदर्स, राइट? So this could be the answer because others might not be that reliable or punctual. Prabhu is punctual and reliable. That's why people prefer Prabhu more over others, right? Because Prabhu is facing financial hardships. This could be one of the choices because people are empathetic. So that's why people want Prabhu to earn more to offset the financial strain. Because Prabhu offers repair services to residents' car related issues. This is a very weak option choice. I would straight out remove the fourth, है ना? इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज प्रभु सर्व्स मैनी टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द स्टील प्लांट, अगेन दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज स्टील प्लांट अलग है, रेजिडेंट्स अलग है, राइट? इफ यू आर सर्विंग टू द टॉप ऑफिशियल्स, you might think that that's why you are charging very high, and there is no reason why you should go in the same car where the top official or what the top officials prefer, right? तो आपको कार से मतलब है, आपको सर्विसेज से मतलब है, right? You don't care whether Prabhu serves to the top officials or not. So this is also again a weak choice. So let's do first, second, and third. Right. First is about the cost of living. Second is about the Prabhu's quality. Right. And third is about the Prabhu financial hardships. So I would say the third talks about the personal reasons. है ना, ये आपका personal reason है, right? ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू यू, है ना, आपको जो सर्विस चाहिए उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, राइट? फर्स्ट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगेन दैट इज समवट अबाउट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रभु, राइट? अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देखो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, राइट? एज ए कस्टमर व्हाई यू शुड प्रेफर प्रभु ओवर अदर्स, right? Think about the Prabhu as a normal driver with some good qualities, right? And do you should care about the Prabhu's financial hardships or about the cost of living, or you will care more about the Prabhu's exceptional qualities that is more related to the services that you are offered, राइट? यू वुड ऑब्वियसली कंसिडर द क्वालिटीज, राइट? आप वही ड्राइवर को प्रेफर करोगे, राइट? एंड यू आर विलिंग टू पे हायर टू दैट ड्राइवर दैट हैज सम गुड क्वालिटीज ओवर द अदर्स, राइट? एंड आई थिंक दैट्स व्हाई द सेकंड ऑप्शन स्टैंड्स आउट। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर आल्सो गुड इनफ, बट यू डोंट हैव मोर इन्फॉर्मेशन की जो वहां के रेजिडेंट्स हैं या जो वहां के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वेदर दे आर एम्पैथेटिक और नॉट towards the Prabhu, right? So if you assume that Prabhu is facing financial hardships, this could be the reason. That is, you are assuming too much about the residents of that village, right? So third will not be the option, right? And first and second में आप देख लो, first also makes some sense, but second is the I would say more strong choice, right? Second is the strongest option, so I think we should go for the second. Second is the correct answer, right? Now let's understand this another question. क्या बोल रहे हैं? After Prabhu increased his charges by 30%, the revenue flow was promising in the beginning, especially from the steel plant's official trips. After a few months, he noticed a dip in private bookings, right? So there are two types of booking. एक तो जो officials हैं steel plant के वो लोग बुक करते हैं, और एक कौन बुक करता है, जो रेजिडेंट्स हैं विलेज के. सो आफ्टर फ्यू मंथ्स कहाँ पे डिप आया? प्राइवेट बुकिंग्स में, that is the bookings by the residents. On exploring further, Prabhu realized that while women traveling solo still preferred Prabhu's services, some of his regular customers were choosing his competitors when traveling as a family. However, he knew that his competitors, while charging lower than him, were still tardy and sometimes cancelled at the last minute, right? अब क्या हुआ, जब लोग फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं दे प्रेफर अदर ऑप्शन, बट जब विमेन सोलो ट्रेवल करती है देन दे प्रेफर द प्रभु सर्विसेज, राइट? और ऐसा क्यों है? बिकॉज द कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग मच लेस देन द प्रभु, बट प्रभु ऑल्सो नोस, राइट, कि जो उनकी सर्विसेज है वो इतनी बेटर नहीं है, दे आर नॉट पंचुअल एंड रिलायबल. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट हेल्प प्रभु टू रिटेन हिज रिवेन्यू फ्लो, राइट? इफ प्रभु वांट्स टू रिटेन द रिवेन्यू फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट हेल्प द प्रभु, right? Please go through all the 5 options and put in your answer. What should be the answer according to you? All right. What else? Chalo, let's discuss it.
है ना. लेट्स कम टू द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, रिवर्ट द प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज टू इट्स प्रायर रेट. मतलब जो अभी सर्विसेज का प्राइस है दैट इज 30% हायर, उसको पहले जैसा प्राइस कर दो, सो दैट यू विल रिटेन योर रिवेन्यू फ्लो. आपका रिवेन्यू सेम आएगा, है ना. दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस. दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस. Right. Second is give 50% discount for personal trips. 50% discount for personal trips. See, you don't have a lot of data कि आपका 50% डिस्काउंट करने के बाद, है ना, विल यू गेट इनफ कस्टमर्स और नॉट, और अगर कस्टमर्स आए भी, विल दैट बी एबल टू हेल्प यू टू रिटेन द रेवेन्यू फ्लो. बिकॉज 50% डिस्काउंट इज यू आर जस्ट डायरेक्टली गिविंग 50% ऑफ योर रेवेन्यू और द प्राइसेस टू द डिस्काउंट, राइट. तो वहां पे 50% इज टू हाई एज ए नंबर. एंड पर्सनल ट्रिप्स में मे बी इट माइट हैपन और इट माइट नॉट हैपन, बट फिर वहां पे ये होगा कि द अदर्स विल ऑल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग द प्रभु दैट व्हाई यू आर डिफरेंशिएटिंग कस्टमर्स, राइट. आप विमेन को नहीं दे रहे डिस्काउंट, आप टॉप ऑफिशियल्स को नहीं दे रहे, बट आप पर्सनल ट्रिप्स में जो फैमिली ट्रिप्स टाइप है उसको 50% डिस्काउंट दे रहे हो. दैट इज लाइक यू आर basically differentiating the customers, and that might not work out very well in the village area, right. So this would not work out for sure among the citizens, so this cannot be the answer. First could be the answer that you are reverting your services to the prior rate. Stick to his current increased charges. May I don't think this could be the right answer, because if you're stick with the current charges, then जो revenue flow you already talked about that it is not promising, तो वहां पे फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा. Charge a premium when women travel solo. This could be again a good choice, or maybe a lot of you agree कि whenever the women travel solo, you can charge a higher premium so that you will be able to retain your flow, right. Charge a premium for the steel plant's official trips. You can do that also, but there is no sense when you are charging about the higher premium for the official trips. But also you can think in another way कि official trips generally require punctuality or the reliability, so if you are offering that, obviously you should go for the premium for the official trips, right. So according to me, I think fourth makes sense, fifth makes sense, and third doesn't make sense a lot. Third doesn't make sense a lot, and one also makes sense. One is a weakest option, I would say, but it is better as compared to the third option, right. तो अगर मैं देखूं तो फोर्थ एंड फिफ्थ मुझे सबसे बेस्ट लग रहे हैं, राइट. एंड वन थोड़ा सा उससे नीचे आएगा, एंड थर्ड आई वुड इग्नोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इफ यू आर स्टक टू द करंट चार्जेस, देन बेसिकली यू आर डूइंग नथिंग, एंड देर इज नो होप कि वहां पे आप रिवेन्यू फ्लो को अपना रिटेन कर पाओगे, बिकॉज यू ऑलरेडी मेंशन्ड दैट यू नोटिस ए डिप इन द प्राइवेट बुकिंग्स, राइट. सो यू आर नोटिसिंग अ डिप, बट टू माई सरप्राइज द गिवन आंसर, द करेक्ट आंसर इज थर्ड ओनली, right, that you should stick to your current increased charge. Now I don't want you to think a lot of things about this, because एग्जाम में भी काफी बच्चों के साथ यही हुआ. a lot of people selected 5 as a option, or a lot of people selected 1 as a option also, right. So I don't have a very good explanation to why third is the correct answer, and I think we should not discuss third as a correct answer, because if we start discussing about the third, then our entire practice and our entire thinking will get disturbed. So let's ignore this question for the moment, and I have already talked about you regarding this, that in the DM section we will have 2, 3, 4 questions where a lot of people will not agree with the correct option, but sadly the ZAT committee does not review it or does not change the correct option, so we have to anyway accept this option. But let's ignore this question for the moment, because this question will disturb the entire flow of the session. Now let's do this question. Saroj, the new CFO at the steel plant, used the services of Manoj when he first traveled from Michaelganj airport to the plant, right. Saroj, the new CFO, used the services of Manoj, right, and Manoj is the new driver, right. The earlier driver was Prabhu. So it is also mentioned that Manoj was a rival of Prabhu in the taxi service business at Kasta. Manoj, upon learning that Saroj would be responsible for hiring taxi services for the steel plant, charged Saroj only 1,500 for that trip. Further, he assured Saroj to charge the same for one-way trip and additional 500 for a round trip to the airport. तो ये तो काफी सस्ता हो गया,
1500 for one way, 2000 for both the ways. Upon realizing that the plant utilized Prabhu's services for all official trips to the airport, Saroj contacted Prabhu to discuss the rates offered by Manoj and inquired why the plant should continue using his services when Manoj provided the same at lower price. Obviously, तो जो CFO था उसने कॉल किया to the Prabhu कि यार let's have a discussion about the fares. Prabhu realized that Manoj charged an extremely low price just to push Prabhu out of his business in steel plant, and there is nothing wrong in that. Now let's read the question. Which of the following reasons given by Prabhu will best help his cause? Right. So go through the options one by one. Let me know the correct answer, and then let's discuss the final or the correct solution. देखो काफी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे ऑप्शंस काफी बेकार होते हैं, तो वहां पे आपको देख के ही पता लग जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है. So you have to just eliminate the wrong options and you will reach at the final or the correct answer. Chalo. So let's discuss this. So first is Prabhu should warn Saroj that Manoj offer is not sustainable, है ना. If Prabhu gives a warning to the Saroj कि मनोज का ऑफर जो सस्टेनेबल नहीं है, there is no reason for Saroj to believe that, है ना. आप उसको बोलोगे ऑब्वियसली दिस इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप अपने राइवल के बारे में ऐसा ही कुछ बोलोगे कि उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, वो फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. सो ये ऑप्शन तो वर्क नहीं करेगा एनीवेज. सो दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट. दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग. नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रभु शुड रिक्वेस्ट सरोज टू टॉक टू अ फ्यू ऑफ हिज कलीग्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. तो प्रभु ने बोला है कि सरोज एक काम करो, आप अपने कलीग से बात करो सिंस यू आर न्यू हियर, है ना. टॉक टू योर कलीग एंड यू विल रीच एट योर फाइनल डिसीजन. सो दिस कुड वर्क, राइट. बट लेट्स रीड आउट अदर ऑप्शंस आल्सो. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. प्रभु शुड इंट्रोड्यूस सरोज टू मिस निधि तावड़े हिज रेगुलर कस्टमर. अब सरोज इज ए CFO, अगर तुम उसको कोई एक अपने रेगुलर कस्टमर से मिला रहे हो, है ना, जिसका खुद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हाउ इट विल एश्योर कि आपका जो प्रभु का कंसर्न है वो वहां पे उसको हेल्प मिलेगी, राइट. इफ यू आर आप कोई भी कस्टमर लेके आ सकते हो, हाउ द सरोज विल बिलीव कि ये कस्टमर की बात मुझे सुननी चाहिए या नहीं, है ना. सो दिस अगेन विल नॉट वर्क एट ऑल, right. Third will not work at all. Fourth is Prabhu should offer to lower his price to the one offered by Manoj exclusively for the steel plant, right. Prabhu should offer to lower his price to the one offered by Manoj exclusively for the steel plant. Fourth could be a good choice कि आपने प्राइस अपना मैच कर दिया, बट दिस शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टील प्लांट, ठीक है. फिफ्थ इज प्रभु शुड टेल सरोज दैट मनोज इज अनरिलायबल एंड टार्डी एंड वुमेन आर अनसेफ विद देम, राइट. प्रभु शुड टेल सरोज. अब इसमें भी यही बात होगी कि प्रभु तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही ऑब्वियसली विद फॉर द मनोज, राइट. अपने राइवल के बारे में वो नेगेटिव चीजें बोलेगा और उसने बोली भी है ना. अनरिलायबल, टार्डी, वुमेन आर अनसेफ विद देम, राइट. सो ये सब चीज बोलेगा, बट देयर इज नो सॉलिड रीजन फॉर द सरोज टू बिलीव द प्रभुज वर्ड्स, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस सीम्स द वीकर ऑप्शन एज कंपेयर टू द सेकंड और फोर्थ. सो मेनली जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज वेदर यू शुड गो फॉर द सेकंड और फोर्थ, एंड यही हमें कंफ्यूजन आती है डीएम में कि इन दोनों में से या कभी भी लास्ट दो ऑप्शंस में से किसको चूज करना है. सो लेट्स एनालाइज सेकंड एंड फोर्थ. सेकंड देखो, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, विच आर द फॉलोइंग रीजंस गिवन बाय प्रभु विल बेस्ट हेल्प हिज कोज, राइट. प्रभु का बेस्ट हेल्प कोज का क्या है, प्रभु का कोज क्या था. प्रभु का मोटिव ये नहीं था कि उसको सिर्फ अपनी जो सर्विसेज है वो ऑफर करनी है. प्रभु का मोटिव ये भी है कि उसको जो प्राइस है वो थोड़ा हायर चार्ज करना है, राइट. और उसको अपनी जो क्वालिटीज है उसको भी टॉप नॉच देना है, राइट, है ना. प्रभु को प्राइस हायर क्यों चार्ज करना था, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें मेंशन था कि कोविड-19 आया, उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, है ना. दैट्स व्हाई प्रभु चार्जेस लिटिल हायर प्राइस एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, और वो अपनी सर्विसेज भी दे रहा है. तो सिर्फ यही मोटिव नहीं है कि मैं अपना बिल्कुल छोटे से प्राइस दे दूं या बिल्कुल कम प्राइस दे दूं, राइट, और या अपने कंपटीटर से अपना प्राइस मैच कर लूं और सारे कस्टमर्स खुद ले लूं. नो. तो अभी सेकंड और फोर्थ में देखो, सेकंड और फोर्थ में क्या हो रहा है. सेकंड में क्या हो रहा है, प्रभु शुड रिक्वेस्ट सरोज टू टॉक टू अ फ्यू ऑफ हिज कलीग्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कि आप अपने कलीग से बात करो हु आर देयर फॉर लेट्स से लास्ट 2 years 3 years एंड हु आर अवेलिंग माय सर्विसेज. दे विल टॉक अबाउट मी, दे विल टेल यू व्हाई आई एम डिफरेंट देन द मनोज, राइट. एंड फोर्थ में क्या हो रहा है कि प्रभु सोच रहा है कि मैं अपना प्राइस डिक्रीज कर दूंगा
एंड दिस विल बी एक्सक्लूसिव फॉर द स्टील प्लांट, राइट। सो यहाँ पे देखो, एक तो प्राइस डिफरेंशिएशन हो गया, यू आर ऑफरिंग डिफरेंट सर्विसेज टू द डिफरेंट रेट्स टू द डिफरेंट पीपल। दिस कैन वर्क बिकॉज आप एक एक्सक्यूज दे सकते हो कि जो स्टील प्लांट है वो बल्क में सर्विसेज आपकी ले रही है, राइट। बट जो आपका कोज था, वो आपका कोज क्या था? आपका कोज कभी भी प्राइस को कम करना नहीं था। आपका कोज था कि एट ए बेटर प्राइस, राइट, यू आर सर्विंग टू ए लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ऑफ योर क्वालिटीज, राइट। बट फोर्थ में क्या हो रहा है? यू आर लोअरिंग योर प्राइसेस, राइट। तो वहां पे जो आपका कोज है, जो आपका कंसर्न है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। सो एज कंपेयर टू द फोर्थ, आई थिंक सेकंड इज द स्ट्रॉन्गर ऑप्शन, राइट। सेकंड में क्या है? प्रभु शुड रिक्वेस्ट सरोज टू टॉक टू ए फ्यू ऑफ हिज कलीग्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। यहाँ पे क्या होगा? जो प्रभु का कोज है वो इंटैक्ट रहेगा, राइट, और जो सरोज का डिसीजन है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट, बिकॉज देन सरोज विल गेट information from the more trustworthy people, right? That's why second will be the correct answer for this option, right? That's it for the new DM set. If you want regular sets from me, please comment in the comment section. Thank you.